Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to talk about types of phrases. And before talking about types of phrases, once again, I'm going to have a recap and I'm going to talk about phrase. As we have discussed about it before, that phrase is basically a group of words that stands together as a single grammatical unit. And we can see in this at the screen there are three different phrases projected over there: a noun phrase, an adverbial phrase, and an adjective phrase. And the most important thing that we came to know about phrases in the previous lectures, that it does not contain a subject and verb, and it can be multi-word, it ranging from 2 to 5 words as we have seen before, and it can exceed more than 5 words also, as we have seen that we have categorized complete predicate part of a sentence as a verb phrase, and then we have found that this is a had complete verb group, and then we came to know about the other parts of speech like noun phrase and then prepositional phrase and then adverbial phrase and so on and so on. So we came to know about some important aspects related to phrase. The one is that phrase does not contain a subject and verb, and along with that the other is that it does not convey a complete thought. If it conveys a complete thought, then it is never going to be a phrase. Rather, if it is not having, जैसे ये क्वेश्चन ये आप पूछते हैं, you ask me a question, sir, कि although it is not having a subject and verb but it conveys complete thought, then what is it? Then that is a fragmentary sentence. ठीक है, fragmentary sentence है, sentence fragmentation है, like looking forward to seeing you. ठीक है, complete thought दे रहे हैं, लेकिन आम तौर पे यही होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, उसके अंदर फ्रेगमेंट्री सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मिस होता है या वर्ब या दोनों मिस होते हैं. दोनों ना हो तो फिर हम उसको फ्रेज के अंदर नहीं रख सकते अगर वो कंप्लीट थॉट दे रहा. एनीवेज, द मेन पॉइंट इज दैट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट एंड इट इज deprived of subject and verb. And when we compare it with clause, then the main difference is that clause contains a subject and verb and conveys a complete thought, whereas the phrase does not do the same thing. Rather, it gives us a, you can say, gives us an incomplete thought. So let's go towards kinds of phrases and discuss them in detail. These are the common types of phrases like adjective phrase, adverbial phrase, noun phrase, prepositional phrase, gerund phrase, infinitive phrase, participle phrase, and appositive phrase. So let's talk about that. We'll be looking at it. We'll be looking at its examples. So please be careful, be watchful, and note down your points that you want to ask questions. Note down your point that you want to understand or you understood about today's lecture. So please note it down so that you can retain all those ideas in your long-term memory. Being a student of linguistics, you need to understand these things. Especially you need to understand phrases, because when you will be writing immediate constituent analysis, you'll have to discuss these things there in detail. So I've started from adjective phrase. It is based on a group of words. One thing that phrase is meant to be having at least two words, and it can have more than two and more than 2 words. ठीक है? So look here, there is an adjective phrase. She had extremely menacing eyes. So look here, adjective phrase, extremely menacing eyes. सो ये सारे का सारा किसको, आइज को मॉडिफाई करे. सो याद रखिए एडजेक्टिव फ्रेज ऑलवेज, ठीक है, जब भी होता है, जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन को ही मॉडिफाई करती है. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव जो है वो हेड होता है. एक्सट्रीमली मेनिकिंग. अगेन, द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन. सो दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि एक जो है वो फॉरवर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, एक बैकवर्ड को कर रहा है. हम इसको आगे जाके जब हम एडजेक्टिव फ्रेजेस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये क्या चीज़ है. ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. So as we are just going to talk about
just kinds of phrases. So look at this one, that what is it, ठीक है, कि noun को modify करता है, noun phrase या noun को modify करने वाला जो group of words है, that is adjective phrase. I'm sorry. Okay, so let's talk about the next one, that is adverbial phrase. ये फिर वही ग्रुप है वर्ड्स का जो कि एडवर्ब का काम करता है. आम एडवर्ब के साथ इसको आप कंट्रास्ट करते हैं एडवर्बियल क्लॉजेस के साथ. लुक हियर, वी विल एस्केप इन द मॉर्निंग, एडवर्बियल फ्रेज होगी. एडवर्बियल फ्रेज में आम तौर पे ये याद रखिएगा, एडवर्बियल फ्रेज जो है वो बेसिकली उसके अंदर वन और द अदर वे वो होती प्रपोजिशनल फ्रेज है. फंक्शन से पता चलता है कि एडवर्बियल फ्रेज है. अब यहीं पे हो ना, वी विल एस्केप टू मरी, ठीक है, तो दैट इज समथिंग एल्स. अब एस्केप, वी विल एस्केप, एस्केप को बेसिकली एस्केप इज बीइंग मॉडिफाइड, सो दैट इज एन एडवर्बियल फ्रेज. देन वी विल एस्केप लेटर, हियर इट इज वर्किंग एज नॉर्मल एडवर्ब. डिफरेंस देखिए, वी विल एस्केप व्हेन द सन राइजेस. सो एडवर्बियल क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं. व्हेन द सन राइजेस, सो क्लॉज बेसिकली यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. वी विल एस्केप कब करेंगे, व्हेन द सन राइजेस. सो व्हेन द सन राइजेस इज इन वन क्लॉज एंड बेसिकली इट इज फंक्शनिंग एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है. Okay, now let's talk about noun phrase.